Hello friends. So here I am going to take your first video lecture, and that chapter name is sampling methods. In sampling methods, first of all we need to understand what is the population survey and what is the sample survey. Here I am considering the textbook, and through the textbook I am trying to teach you. So that classroom teaching is also going on, so whatever I discussed there, so I'm just briefing it here, and then I will clarify or how to calculate the numbers as well as the theoretical concepts. So first of all, let us try to understand what is the population survey. So for statistical study of any problem, the information is required to be collected regarding the problem. So this all unit, if we are considering the all unit under the field of inquiry are examined and information is obtained from them, it is called population inquiry or sample survey. Or sorry, not sample survey, census inquiry or complete enumeration or a population study. So population study is the study of all units under the investigation. As for example, if a person is interested to study of economical condition of student of the college, and if he gather information regarding each and every student of the college, he is making the population study. Instead of this, if someone is studying only few students, then it called considered as a sample survey. So this is the difference between the population survey and sample survey. So if the population contains finite numbers of units, it is called finite population, and if it is having infinite number, so if not countable, then it is called infinite population. So let me have the next page. So first of all, let us understand that sampling method or sampling. So the aggregate, here is the definition: the aggregate of units drawn from a population of some scientific method for gathering information regarding the characteristic under study is called sample, and the method of selecting a sample is called sampling. So when you are having large number of observation, let me have this is the data, whole data. So if I am considering this page, then this page is called my population, and among this page, if I am considering only these lines, so that is called sample. So you can examine that whole page is printed in a normal with the normal fonts, and this definition is printed with the dark letters. So if I am considering few letters from here, then we can say that that is a sample of that written dark letters. So the above illustration, if students are selected from the college and information regarding their economic condition is obtained, is called sample survey. The aim of the sample study is to estimate the characteristic of population. So your sample should be represented the population. Now let us understand what are the characteristics of good sample. So here are the few characteristics of good sample. A sample must be representative of the population. That is, all characteristics of the population should be in the sample. So just say for example, you must be heard in your lower standard, your teachers definitely conveyed the message. If you are tasting any sabji, then you are considering only taste of one spoon, and you are considering that whole bowl is having the same taste. So that called a sample, proper sample. Second, each unit of a population must be independent, and the selection of any unit of the population should not be depend upon the selection of any another unit. So your sample unit should be independent of each other. तो एक भी किस्म का बायस वहाँ पे नहीं आना चाहिए कि ये सिलेक्ट हुआ है तो मुझे ये सिलेक्ट करना है. So otherwise that will influence your final result, and maybe it is mislead or it is going to be wrong. Then third one is all units of the sample should be selected during the same period of time.
तो अगर पॉपुलेशन स्टडी इफ यू आर कंसिडरिंग दैट सेंसस डेटा, so when you're counting census data of 2021, then you should consider that era only. So you cannot pick few fellows from the 2020 and few fellows like COVID. If someone want to examine or make a survey of few people, तो वहाँ पे 2019, 18, 17 के कुछ डेटा लेगा और कुछ डेटा 2021 या 20 में से लेगा. सो दैट डेटा विल मिसमैच, क्योंकि वहाँ पे कोविड का कोई भी पेशेंट नहीं था. तो यहाँ पे एक ही जो भी आपका स्टडी है वो आप स्टडी के थ्रू पता चलेगा आप लोगों को. देन नो यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी फेवर्ड at the time of selection. That means that should be unbiased. All units of the sample should be selected under the identical conditions. And the last one, the number of units of the sample should be adequate. The less number of units are selected, better accuracy cannot be achieved. So जैसे जैसे सैंपल बढ़ते जाएंगे, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटा है, लेट मी से द डेटा इज 2, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 5 and 100. Now if I am considering only one data and I am selecting 100 or on the random choice it comes 100, तो पूरा डेटा है जो करीबन दो सारे नंबर्स 2, 3, 2, 3, 2, 3 के नज़दीक है, 2, 3, 4 के नज़दीक है. सो दिस 100 विल मिसलीड. तो यहाँ पे डेटा जितना आप ज़्यादा कलेक्ट करोगे उतना अच्छा रहना चाहिए. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कंसिडर दैट योर स्ट्रेंथ, योर टाइम फ्रेम, योर मनी कंडीशन जो भी है वो सेकंड स्टेज पे आएगा. If more units are selected, the expenditure, yes, more the expenditure, time, etc. will be more. Hence, taking into consideration the size of the population, the amount to be spent in the sampling, and the accuracy to be maintained, the size of the sample should be decided. तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी फोकस रखनी चाहिए. Now there are few advantages of sampling, because if you are making some population survey, then it is not advisable in all the cases. What happen if I am examining bulb life? So if I am trying to examine bulb life and if I make a population survey, so no, I cannot send single bulb into the market, because if I am examining then all the bulbs are going to be fused. So in this case sample survey is only a way. So what are the advantages of sampling? So as few units to be examined, detailed information can be obtained, thus the standard of accuracy can increase. As small numbers of units to be examined, the survey work can be completed in less time. If the results is required within given period of time, sampling is useful. Third one is the method are less expensive, as I told that lesser number of units are examined, so obviously that consume less money, so that is less expensive compared to the population survey. As few people are to be employed for survey work, experts can be selected and the results become more reliable. तो यहाँ पे जैसे जैसे काम कम है तो हम जो भी इस्तेमाल करना है वो कम ही करेंगे. सो मैंने जैसा एग्जांपल दिया दैट बल्ब इफ in destructive type of testing, that is during the inspection the unit is required to be destroyed or fused, the sampling method is only a way out. Sometimes the results obtained from the population surveys are required to be tested. Sampling can be used in such circumstances. Time and energy can be saved by the sample survey, and when population is very large, then the method of sampling is useful, drawn inference about it. तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पॉपुलेशन सर्वे, पॉपुलेशन लार्ज है और लिमिटेड टाइम में आपको अगर डेटा चाहिए देन ओनली सैम्पल सर्वे इज ओनली अ वे. तो ये दीज आर द सम फ्यू एडवांटेजेस. नाउ साइज ऑफ सैम्पल, आई एम कमिंग टू दैट point at the last, or we are going to discuss few chapters, so at that moment I will discuss it timely. Just I am focusing to the characteristics, the size of the population and the scope of the survey, कहाँ पे क्या focus करना है, then limitations of the budget, the expected standard of accuracy, then variability
in the units of the population. And the last one, the time limit within which the survey is required to be completed. If you are having a limited time frame, then you should complete your work within time. So in that case, you no need to examine all the units, so you have to go with the sample. Even when you are going with the sample only, even you have to consider lesser number. So here one sorry so here the difference between the population survey and the sample study. What is the difference between the population study and sample study? So in population study, all units are examined, hence it requires more time, whereas sample survey, that lesser number of units are to be examined, so we need less time. The cost of survey is higher, the cost of survey is less. As more observations are to be studied, the accuracy cannot be maintained. हाँ, कुछ आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वहाँ पे उतना शायद आप मेंटेन नहीं कर पाओ. सो लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टू बी स्टडीड, द डिजायर्ड एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन. व्हेन द स्टडी इज डिस्ट्रक्टिव नेचर मतलब जो भी मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया, या फिर कोई भी ऐसा एग्जांपल लाइक नाउअडेज दैट एलईडी टीवी. So you must be heard the word कि this TVs can be run up to this many hours. तो यहाँ पे आपको अगर वो टेस्ट कैसे वो क्लेम कर सकता है कि हाँ मेरा टीवी इतना चलेगा. So first of all he has to run at his place and then only he can derive the number कि हाँ ये 1 लाख घंटा चलेगा या 2 लाख घंटा चलेगा. But after observing it has to be destroyed. As more person are to be employed in the survey work, expert may not be available. As few persons are to be employed, so expert can be appointed. As all observations are to be studied, detailed study cannot be done, obviously. So few observations are to be studied, detailed study can be done. So these are the basic differences. Okay, let me have that a 7th and 8 also. When the field of inquiry is very large, this method laborious and difficult, and the sample survey is less laborious and relatively easy. And the last one but not the least, when the complete information is needed, this method is to be used. जैसे हमारा सेंसस सर्वे होता है कि 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, नाउ इट गोइंग टू बी डन इन 2021. इन दैट केस पॉपुलेशन सर्वे होना ही है. सो व्हेन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज. तो वहाँ पे आप सैम्पल सर्वे नहीं कर सकते. सो यू हैव टू एग्जामिन. आपके घर पे भी कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए आएगा ही आएगा. मे बी कोविड इज़ द रीज़न, तो शायद ये इस बार जो नॉर्मली होता है एवरी 10 ईयर्स में, तो वो सैम्पल सर्वे शायद पॉपुलेशन सर्वे ना हो. बट आई गेस यू गेट द पॉइंट. So methods of sampling. So there are two kinds of methods. One is probabilistic sampling method and non-probabilistic sampling method. So in our study or in our syllabus, we are having probability sampling method. So in probabilistic sampling method, in our study again we are having 2 methods only. That is simple random sampling method and stratified random sampling method. So aim of the any sampling method is to get reliable information about the population from the sample drawn from it. तो जो भी आप पॉपुलेशन में से सैम्पल डेटा ले रहे हो, जो भी यूनिट सिलेक्ट कर रहे हो, वो यूनिट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबली हम नोटिंग कर पाए, इस हिसाब से वी आर गोइंग इन दिस प्रोसेस. नाउ simple random sampling. What is the simple random sampling? So each and every unit of population is given equal chance to get in result. So when you are having 10 units in population, so every unit is having equal chance, that is 1/10, 1/10, 1/10. तो अगर probability में आपका one line equation है, so in that case if n units are there, then it should be 1/n. They are having 1/n chance. Then another method, first method is lottery method, second method is random number,
सो थ्रू दिस नंबर्स यू कैन सिलेक्ट द सैम्पल. हाँ, तो ये जो भी है, अगर 4 डिजिट का नंबर अगर लेना है तो अगर 5000 से कम, सॉरी 5000 से कम लेना है तो आपको नंबर चूज़ करना होगा. फर्स्ट ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो आपको सीक्वेंस में जाना है. मैं अभी रैंडम में चला गया. सो फर्स्ट विल नॉट कंसिडर, सेकंड विल कंसिडर, थर्ड विल कंसिडर, फोर्थ विल कंसिडर, दिस वन इज नॉट कंसिडर्ड, this one will consider, this one not consider, this one not consider, will not consider, this one will not consider, this one will consider. So ये जो रैंडम टेबल है, तो आपकी डिमांड जो भी है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो आपको इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो. 1 to 5000 पेजेस का कॉन्स्टिट्यूट सैम्पल. तो यहाँ पे आपने इसको स्किप किया, फिर इसको कंसिडर किया, फिर इसको स्किप किया, फिर इसको कंसिडर किया, इसको स्किप किया, इसको कंसिडर किया. तो इस हिसाब से आपको एग्जामिन करके आपको सैंपल चूज करना है. सो हियर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रैंडम सैम्पलिंग. सो बेटर we'll discuss it in next lecture. In next lecture I will discuss simple random sampling as well as stratified random sampling, and also I will explain the practical sums. Till then, bye. Thank you. I am going to explain few methods. So among those few methods, the first one is simple random sampling method. So in last lecture we discussed the theoretical concepts and clarified that how can we use these simple random sampling methods in practical life. And before jumping to that part, let me have that PDF first. So we have stopped here. So in last lecture I told you we will continue it with the sums in next lecture. So sampling without replacement, or what it mean by, so sampling without replacement, let me have the blank PPT also. So we can select a sample by two ways. So if populations is there, then from the population we are going to select sample. Now we can select by several ways, like lottery system or through the random number. But this sample selection is can be a with replacement or without replacement. So if it is with replacement, we can that unit can have another chance to get in result. And if without replacement, once unit selected, it cannot be select again. So if we are selecting, suppose say for example population size is capital N, and among this N we are going to select small n units. So if we are selecting with replacement, then it could be select as n raised to n, and if we are selecting without replacement, then it can be select nc n base. So just keep in mind, we can select sample with replacement or without replacement. So in our syllabus or that basic part, not all of the, but in 90% cases you will have some from the without replacement. So now let me explain this part. So in drawing sample, the unit once selected is not replaced in the population before taking the next unit. The method is known as sampling without replacement. Clear? So now let me bring it down. So E y bar of capital Y bar, V of Y bar is equal to n minus n upon n into capital S square upon n, where S square is equal to sigma y minus y bar square upon n minus 1, because of it is a without replacement. If it is with replacement, then you can simply divide with the n, and small s square is equal to small yi minus small y bar square upon n minus 1. So normally when we are studying any equation or any method, so we need to verify this results. Now what it mean by E of y bar is equal to capital Y bar? So it's a estimated value of sample mean, it should be equal to the population mean. Now let us understand with the example. So this example is for the studying characteristics of the observations of a populations 10, 12, 20, 22, 26. How many random samples of size 2? How many random samples of size 2 without representation can be taken from it? So as I just discussed, NCN. So we are having 5 observation, and we are going to take 2 observations as a sample. So it could be say 10 sample. Now let us check it in the book.
But before that, let me introduce that LHS and RHS, LHS and RHS, and LHS and RHS. What is the question? Making the list of all samples, verify the following results. So by the using all these population observations, first we need to derive some samples, and after deriving those samples, we need to verify the results. So E of y bar is equal to capital. So what I am going to do here, so first I am deriving this right hand side figures. So right hand side figures y bar, so first capital Y bar, capital S square, and n minus n upon n into s square upon n. So firstly I am deriving these numbers. So how can I derive capital Y bar? So simply sigma yi upon n. So whatever the numbers are given, 10, 12, 20, 22, 26, that should be divided with the 5. So 90 upon 5 and 18 is the answer. Capital S square. So if just let me remind it, 10, 12, 20, 22 and 26. So if I will be there, then I will prepare a table 10, 12, 20, 22 and the last number what? 26. Then I will prepare one more column yi minus y bar. So before that, let us get the value from it. That y bar value is 18. So I am subtracting 18 from all the observations. So you may see here they have individual calculated the numbers. So instead of that I am subtracting 8. So it is minus 8, it is minus 6, it is 18, that is plus 2, plus 4 and plus 8. So this total must be 0. Then we require square of this column. So yi minus y bar whole square, 64, 36, 4, 16 and 64. So this total is 100, this total is 80 and 184. Let us check it out whether it is there or not. So this total should be 184, and that 184 divided with the 4. So 184 divided with the 4, that is equal to 46. You may check it here. 184 divided with the 4. So final answer is 46. So let me have equation number 2. Even as well as we can also derive the third equation, n minus n upon n into s square upon n. So what is the answer? Capital N is 5, small n 2, capital N 5. Just we got the answer of what is it? 46. So s square is equal to 46 divided with 2. So this is 3, this is 5, this is 2. So this is 23, 23 3s are 23 3s are 69 divided with the 5. So it should be 69 divided with the, sorry, so at the end, yes, here it is. So they have considered in a fractions. So let me highlight the part. So 3 into 46, why it is 46? Okay, 5 minus 2, okay, good, 5, 46 divided with 2, 23, okay. So they have divided with the 10, but instead of that I have multiplied with the 23 into 3. That again it will give the same answer. Let make it double. So 70 into 140, 138, 138 upon 10 is equal to what? 13.8. So answer is 13.8. So according to the formula we have derived the number. So among these three numbers, right hand side, y bar, yes, 18, capital S square, yes, it is 46, and this is 13.8. Now with the help of tables, with the help of sample number, because here it is a sample numbers, so we need to derive sample based numbers. So that is why I am preparing a table. So instead of calculating the numbers, let me use this PDF. So first of all, I have generated the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So first sample could be 10, 12, second, cause this number cannot be repeat. So 10, 10, 20, 10, 22, 10, 26, 12, 20. So through this way you can describe 10 observations or 10 samples.
rather. Now sample mean, how to calculate sample mean? So this is my small y1 and this is my small y2 for if possible sample is this. So calculated number is 11, 10 plus 12 divided with the 2, 11, 10 plus 20 divide with the 2, 10 plus 22 divide with the 2, 10 plus 26 divide with the 2, 12 plus 20, 32 divide with the 2, 34 divide with 2, then 38 divide with 2, 42 divide with the 2, 46 divide with the 2, and 22, 26, 48 divide with the 2. So this is my sample means of different samples. If this happened, then this will be the answer. This happened, then this will be the answer. So now I am taking the total of this column is 180. How many samples are there? 10. So this 180 number should be divided with the 10. So E of y bar 180 divided with the 10. So E y bar upon m. So that number is what? That number is okay. Now I am moving to the second part. Then second part is small y bar minus capital Y bar. Small y bar values we are having 10 different values, but capital Y bar we are having fixed answer 18. So I am subtracting 18 from these numbers. So minus 7, minus 3, minus 2, 0, minus 2, minus 1, plus 1, plus 3, plus 5 and plus 6. So I have subtracted 18 from the different sample means, and that total also be a 0. This total will be always 0. Now I am taking square of this column, so it will be 49, 9, 4, 0, 4, 1, 1, 9, 25 and 36. So this total is 138. Now let us verify the number. Vy bar is equal to n minus n upon s square upon n. So V of y bar is equal to, they have not calculated the number, so let me do it. Yes, here it is. V of y bar minus capital Y bar square upon 10. So 138 upon 10 is equal to what? 13.8. And according to the formula we get the same answer, 13.8. So again we have verified the result. Now third and last result, small s square. Now what is the small s square formula? Again we have to deal with the small numbers. Small numbers means sample numbers. Now that formula is 1 upon n minus 1. So what is the small n value? 2, because of it's a sample size 2. So 2 minus 1 is what? 1. So when we are dealing with the 1 upon 1 with any number, that number itself the answer. Now let us focus to the yi minus y bar square. So where is the yi's? So we are having y1 and y2. These are called yi's, y1 and y2. Where is the small y bar? So this is the fixed number, constant number, y bar. So we need to subtract 11 from the 10 and 12, and after making square we have to take total of those numbers. So 10 minus 11 square plus 12 minus 11 square, and that is equal to 2. The same way here the fixed number is 15. So 10 minus 15 square plus 20 minus 15 square divide with 1, n minus 1, it is equal to 1. So that answer 25 plus 25, it is equal to 50. And according to the same pattern we need to derive all these numbers. So let us check it out. So it's a difference is 6. When we are dealing with the two numbers, that this number is a middle number, and when we are discussing two numbers and its mean, so that mean is equidistant from the all these two numbers. So what I am doing here, I am just taking difference between the one number 10 and 16. What is the difference? 6. 6 square is what? 36, and its double is what? 72. So it's my answer, 72. One more time, 10 minus 8, 8 square is 64, 64 double is 128. 12 minus 16 is 16, cause difference is 4, 4 square is 16, 16 plus 16, 32. 12 minus 17, difference is 5, 5 square is 25, and its double is 50. So through this way you can calculate the numbers, and their total is 460. Then we need to derive with the 10, because of E s square is equal to sigma s square upon
m, and 460 divided with the m, that is equal to 46, and just we derived a square. Where is the square? Here it is 184 divided with what? N minus 1, 184 divided with the 4. So 4 4s are then 24, 46. So this answer is also 46. So this is how you can calculate the number. So today's lecture is complete. Thank you. Hello friends, good afternoon. So here I am going to take your new unit, that testing of hypothesis. Now in the testing of hypothesis we are having several categories, that large sample test, small sample test, or non-parametric test, but they are divided in three parts, or rather saying the three units. So in first unit we'll try to discuss testing of hypothesis as well as large sample test. Now in this unit what I'm going to explain first. So first I will going to introduce it, then we'll try to explain what is the large sample test and which kind of test are going to handle in this concept. So first of all, let me bring it down. So in the introduction, the main objective of taking sample from a population is to get reliable information about the population, isn't it? So from the obtained sample, that conclusion should be drawn about the population, and it is called statistical inference. So it is divided in two parts: estimation of the parameter and testing of statistical hypothesis. So let us understand what is the mean of parameter. So a characteristic of a population is called parameter. Say for example, if someone is trying to get average height, then that height is your parameter. That measurement of height is parameter. Suppose someone is trying testing some characteristics like honesty. So in particular group, how many honest people are there? So in that case, it is not considered as a parameter, but somewhat you are going to test it, so it may consider as a parameter. So population mean is a parameter value. Similarly, population median is also parameter, standard deviation is also parameter, population proportion of some attributes etc. are called parameter. So parameters are generally denoted with the Greek letter. So Greek letter signs, you must be knowing that mu, sigma, capital P. So for the proportion value we are indicating with the capital P. Now against the parameter we are having one more value, that is statistics. Now what is the statistics? The same kind, whatever we define in parameter we can define in a similar manner, that sample characteristic under the study is called statistics. तो दो पार्ट है, एक पॉपुलेशन पार्ट रहेगा. लेट मी हैव पेंट. Okay, I have already opened it. So when you are going to discuss that characteristics of the whole population, it is called parameter. But when you are selecting a sample from the whole population and then you are going to study it, then it is called statistics, is it? So let me have the, in order to estimate parameter of the population, sample is drawn from a population. The constant obtained, it is one more another way to define that constant obtained from the population is called parameter, and here it is written as a constant obtained from a sample is called a statistic. Now thus the sample mean is mentioning with the capital small x bar, sample standard deviation is mentioning with the small s, sample proportion mean of some attributes is small p, are statistics. That is the function of sample observation is called statistics. Now let me jump to the next page. Now here the difference between the parameters and statistics. So you may see here that mean value is mentioning with the mu and x bar. Both are notations for the mean value, but one is for the one is representing the parameter population and one is representing the sample. Same way as the sigma and s
It may be small s, but it is written capital S, so that doesn't make difference. Proportion of some attributes is capital P for the parameter, for the population, and small p for the sample. Now, sampling distribution of statistic. When we are attempting to noting the points, now if we are having capital N size and number of sample is small n, now these samples will give the different value of statistic. Now when we are calculating some numbers from by the using sample data, then it is called statistic. Last अभी just discuss किया, constant obtained using all observations of sample is called statistic. तो यहाँ पे जितने भी statistics बनेंगे उनका एक distribution table में convert करोगे, that table is called sampling distribution of a statistic. Now as per example, different samples of size and drawn from a population of different values of sample mean x bar are obtained. You must be remember in last case what we did, say in SRS, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 और 2 का सैंपल है तो हमने क्या किया, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 ऐसे करके 4 C2, यहाँ पे 6 4, तो ये सभी के x बार वैल्यूज़ हो गए 1.5 2 2.5 वॉट एवर. तो यहाँ पे इसको हम अगर टैलीज मार्क के थ्रू अगर रेंज बनी 1 से लेके 2 की रेंज, 2 से लेके 5 की रेंज और 5 से लेके 10 की रेंज, अगर टैलीज मार्क बना के हमने तो जो भी टेबल तैयार किया वो टेबल 3 5 एंड 2, so that table is called sampling distribution of statistics. Obtained can be arranged in a form of frequency distribution known as sampling distribution. Thus we have sampling distribution of sample mean x bar. तो इसी तरह से आप x bar का बना सकते हो, s का बना सकते हो, proportion mean का बना सकते हो, depend. Now standard error of statistics. So what is the standard deviation? So it's a formula is what, sigma x minus x bar whole square upon n minus upon n. If you are discussing without n, then it should be divided with the n minus 1. Now standard deviation of sample statistic, ये जो मैंने sample statistic बनाया, ये जितने भी different है वो value है, statistic value है. ये sample का आंसर ये हुआ, ये sample का आंसर ये हुआ, तो यहाँ पे जितने भी values बन रहे हैं उसका अगर standard deviation find किया जाए, then it is called standard error of statistics. Clear? So the different values of sample mean x bar, the SD of x bar is called standard error of. It is obvious that the standard error of x bar will depend upon the size of sample and variability of population. Now here few examples are there. अगर आपका example, you have to remember this formula. How many formulas are there? Total 5 formulas. So according to the given problem, depends on the given problem, you have to apply these formulas. These are the formulas for what? Standard error. So if someone is asking what is the standard error formula for the x bar, then you should answer sigma upon square root of n. Sir, sigma is a parameter or statistic? Sigma is a parameter value. But if it is if you find s, then it should call statistic value. तो आपको यहाँ पे ये फोकस करना ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक वैल्यू है कि पैरामीटर वैल्यू है, तो उसी से आपका जो भी स्किल है वो हाईलाइट होगी. अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ आगे जाके कुछ समझना चाहते हो तो आपको बहुत कॉशियस रहना है और आपको बहुत केयरफुल रहना है कि एट व्हाट टाइम यू आर अप्लाइंग विच नोटिस. सो दिस इज स्टोरी ऑफ स्टैटिस्टिक. आई विल कम इट लेटर ऑन, बट टाइमली लेट मी टेल यू. Standard error of x bar is what? Sigma upon square root of n. Difference between two means when you are comparing two parameters. Say for example, if you are discussing any characteristic of city Ahmedabad and Baroda, or Ahmedabad and Mumbai recently, both the governments, if we are trying to compare Ahmedabad and Mumbai, both the governments are taking proper steps towards COVID, but in Maharashtra or in Mumbai, it is not controllable, or they are not able to make control over the new patients. But in Gujarat, we can say that it is under control, so we are taking proper steps. Now, they are equally take proper steps or not. If someone wants to know result, then he or she may apply the difference between two means.
तो यहाँ पे जो भी मेरा मेजरमेंट्स होगा वो मैं आपको वो जब सम्स डिस्कस करवाऊंगा तब अब मैं आपको बताऊंगा. द टाइमली जस्ट कीप इन माइंड फॉर्मूला इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. It look like same. Let me show you. What is it? Sigma upon square root of n. Now if I am making instead of this, if I am writing sigma square upon n, then is it okay? Yes, it is okay. So what is the, when we are comparing the form mean, then sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon, is it? Use of standard error to test whether the given value of statistic differs significantly from the intended population parameter. Whether the difference between the value of sample statistic and population parameter is significant, the difference may attribute it to the chance or sample fluctuation. जो मैंने एग्जांपल दिया अभी अहमदाबाद मुंबई का, वो एग्जांपल के साथ ऐसा एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने हैं. देन यू मे अप्लाई दिस. नाउ टेस्ट the randomness of sample, that is the test whether the given sample is regarded as a random sample from a population. तो ब्लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है कि प्रॉपरली बैलेंस. रैंडमनेस का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको थर्ड सेम में बताया था कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी कॉइन फॉर अटेम्प्टिंग एनी experiment for tossing a coin, then you are expecting head, tail, head, tail, tail, head, tail, head. Now sometimes you are getting continuous 3 heads or 4 heads, and then you are getting in the next round you are getting tail. So whether that coin is maintaining the randomness or not, if someone was to someone interested to test it, then he may test the he may make a test. Then to obtain the confidence interval for the parameter of population size, when you are defining any parameter, then you should stretch the value up to some extent you are going to allow. So again one more use of SE to determine the precision of sample estimate, because precision of statistics is 1 upon standard error of statistics. Now statistical hypothesis. What is the statistical hypothesis? A statistical hypothesis is an assumption about the parameter of the population or nature of the population. As for example, if someone wants to trace that mean height of the class is 178 or not, then that is called population parameter. Null hypothesis. Statistical hypothesis. And null hypothesis is what? Statistical hypothesis which is taken for the possible acceptance is called null hypothesis. It is denoted with the H naught. And what is the alternative? Then rejection of the null hypothesis is called alternate hypothesis. So this is what about your statistical inference. It's a first lecture. So in next lecture I will trying to cover which kind of errors are there, and then how can we set one tail test or two tail test, or at which level we should examine the particular details. So till then, bye, thank you. Hello friends, here I am going to take your next lecture. So in this lecture I am going to complete your theoretical concepts, as well as that if it is possible we'll try to discuss few questions, mathematical questions. So I have already covered this standard error. So standard error is a standard deviation of the sample statistic is called standard error, and there is a most important role in testing part. So first of all, let me have that this part is over. Statistical hypothesis. So I already discussed that assumption regarding the parameter is called hypothesis, nature of hypothesis. Now null hypothesis, the statistical hypothesis which is taken for possible acceptance is called null hypothesis, and it is denoted with the H naught. At the same time, let me have paint part. So whenever I feel to write something, so I can do that. So let me open it first. Paint. It is ready. Yes. So it is denoted with the H naught.
Now sometimes we would like to taste or not. I already discussed this H naught and H1. So these are the kind of taste, H naught versus H1. So either this true or this true. Among these two any one can be proven. मतलब अगर आपने H नॉट जो भी एज्यूम किया है सही है गलत है, सही है गलत है, तो आइदर दिस विल गोइंग टू सिलेक्ट और दिस विल गोइंग टू सिलेक्ट. तो यहाँ पे हमारा जो भी H नॉट है वो एजम्पशन रिगार्डिंग व्हाट पॉसिबल एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट कर रहे हो कि ऑल्टरनेट को सिलेक्ट कर रहे हो, वो आपको थ्रू द टेस्ट पता चलेगा. नाउ व्हाट इज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस? सो हाइपोथेसिस complementary to the null hypothesis called alternative hypothesis. तो जो भी अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स है, बॉक्स में से सपोज इतना भाग है जो रिजेक्ट हो रहा है, उसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये बाकी का रहा वो पार्ट, तो ये पार्ट जो भी है वो एक्सेप्ट होगा. तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो गया. नाउ टेस्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस, statistical hypothesis. Now when you are going to test something, at that moment you are not clear that whether you are going to select or wrong. Suppose कोई unknown चीज़ है, अगर आप उसको अटेंड करने जा रहे हो, से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फास्ट बॉलर का टीवी टेलीविज़न पे देख के आपने देखा कि जो भी है सौरव गांगुली या फिर महेंद्र सिंह धोनी या जो भी है, आपको लग रहा है कि वो अच्छा प्ले नहीं कर रहे या फिर वो कर नहीं रहे. अगर आपको मौका मिला जाए कि आपको उस बॉलर के सामने खेलना है, देन यू आर पुटिंग द हाइपोथेसिस दैट आई एम डूइंग गुड. तो यहाँ पे जो भी होगा आपका मीन वैल्यू होगा या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो. अब ये सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है. आप खेल भी पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है आप खेल पाओगे, बट व्हेन यू आर कमिंग टू द ग्राउंड एट दैट मोमेंट व्हाट यू आर रियलाइजिंग, मे बी 180 का जो स्पीड से बॉल डालते हैं 170 की स्पीड से बोलते हैं, तो टेलीविज़न पे आपको कैमरा की हाई डेंसिटी के हिसाब से आपको वो क्लियरली दिख रहा है बॉल, बट व्हेन यू आर फेसिंग इट तो वहाँ पे हो सकता है कि आप प्रॉपरली फेस ना कर पाओ. तो यहाँ पे आपका जो भी एजम्पशन है वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है. तो यहाँ पे एरर आएगा ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ पे अगर ट्रू है एक्सेप्ट होगा और फॉल्स है तो रिजेक्ट होना चाहिए. आइडियल सिचुएशन है. हाँ, ट्रू है तो एक्सेप्ट होगा, फॉल्स है तो रिजेक्ट होगा. बट इफ इट इज ट्रू एंड इट इज रिजेक्टेड थ्रू द सैम्पलिंग प्लान, देन इट इज कंसिडर्ड टाइप 1 एरर. And if it is false and it is going to accept with the sampling plan, then it is called type 2 error. So hypothesis may be true but it is rejected by the test. Hypothesis may be false but it is accepted by the test. Hypothesis may be true but it is accepted, always it should be always accepted, and hypothesis may be false and it may rejected. तो थर्ड एंड फोर्थ में तो करेक्ट डिसीजन है, but while the first and second are errors, that error is commenting rejecting the hypothesis which is true is called type 1 error. तो टाइप 1 एरर को क्या बोलेंगे? अल्फा से मेंशन करेंगे, और टाइप 2 एरर को बीटा से मेंशन करेंगे. सेम 3 में हम ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर इन डिफरेंट एंगल से पढ़ चुके. वहाँ पे क्या था? तो प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क. तो वहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट होने के बावजूद वो रिजेक्ट हो रहा है, तो वो प्रोड्यूसर विल सफर, दैट इज व्हाई इट कॉल्ड प्रोड्यूसर्स रिस्क. कंज्यूमर रिस्क, हाँ गलत है और मार्केट में आ गया तो कंज्यूमर्स रिस्क हो जाएगा. तो ये इनडायरेक्टली हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. सो व्हाट इफ type 1 error and type 2 error is there, then for that we are having a concept level of significance which is balancing the type 1 error and type 2 error. No doubt they are interrelated. that type 1 error, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम बढ़ाने का ट्राई करें, क्योंकि ये सारा कुछ हमारा हमने जो बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये जो भी है आपका रीजन टोटल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये रीजन कितना है? 1 है. अब उसमें से कितना बार हम पार्ट हाई प्रोबेबिलिटी में डालते और कितना कम प्रोबेबिलिटी डालते, वो दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड है. अगर एक पार्ट कम होगा तो दूसरा पार्ट बढ़ जाएगा. सो
should be kept minimum. So our first condition, both the types of error should be kept minimum, but as they are interrelated, it is not possible to minimize both the errors simultaneously. Hence, in practice, probability of type 1 error is fixed and probability of type 2 error is minimized. Clear? So the fixed value of type 1 error is called level of significance, and it is denoted with the alpha. The significance of probability of rejecting hypothesis which out to be accepted, the most common use of significance 5% and 1%. तो ये दो लेवल है, वही लेवल पे एक 5% लेवल आया और एक 1% लेवल आया. उसका मतलब ये जो पूरा रीजन है उसमें से 5% आपको डिनोट करना है, 5% पे एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब 1 वे है कि 2 वे आगे आएगा. पहले क्रिटिकल रीजन को डिस्कस कर लेते हैं. इन लार्ज सैंपल टेस्ट Z is used to be test statistically. The total area under the standard normal curve is 1. The area of region standard normal is divided in two regions by the predetermined level of significance. मतलब ये predetermined significance level जो भी है हमारा, हमने जो डिस्कस किया कि कौन से लेवल पे टेस्ट करना है, 5% पे कि 1%, तो 5% डिसाइड कर लिया, बट किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए 2 tailed एंड 1 tailed कंसेप्ट है. बट बिफोर दैट we have to identify the accepting region and rejecting area. The area of the normal curve corresponding to type 1 error, that is probability of rejecting hypothesis which is true, is known as area of rejection or critical region. Understood? So अगर मैं मान लूँ अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे कम है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा और इससे ज़्यादा है तो मैं रिजेक्ट करूँगा, तो ये आपका क्रिटिकल रीजन हो गया. What is it? The area of normal curve corresponding to type 1 error, that is the probability of rejecting hypothesis which is true, is known as area of rejection or critical region. Clear? तो acceptance region जो भी होगा वो आपका जो लिमिट बनेगा वो आपका insert region बनने वाला है. If computed value of Z is fall in critical region, the null hypothesis may be rejected. Clear? तो यहाँ पे अगर आपका कोई वैल्यू यहाँ पे पड़ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हम H0 एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे कोई रीजन में पड़ा तो H0 रिजेक्ट करेंगे. तो अगर कोई आंसर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में हो रहा है तो वो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. सो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व other than the critical region is called acceptance region, and computed Z value fall in the region, then null hypothesis will be accepted. In short, आपकी जो भी calculated value होगी वो जो भी है हमारा ये Z value 0 है, वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए. और Z value और acceptance region आप 2 tail कर रहे हो कि 1 tail कर रहे हो वो मैटर करेगा. ये अगर 2 tail है तो दोनों जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपका ये पॉइंट वैल्यू 1.96 है, तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो आपको H0 रिजेक्ट करना है. उससे कम आए -1.96, इससे कम आए तो भी आपको रिजेक्ट करना है. -1.96 से लेके +1.96 की तक कहाँ कोई भी वैल्यू है कैलकुलेटेड तो वो एक्सेप्ट होगी. नाउ लेट अस हैव द आइडिया ऑफ 2 tail and 1 tail. Now 2 tail and 1 tail, by the word itself it is suggesting we are considering both the sides, that is 2 tail, and if we are considering any one side of rejection then it is called 1 tail. So standard normal curve is the critical region may be given in 2 ways, on both the tails of the curve and on one tail of the curve, either the right tail or left tail. अभी यहाँ से कुछ बोलो कि मिनिमम इतना ही इतना होगा तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये पार्ट यहाँ पे पड़ेगा, तो एक्सेप्ट करना मिनिमम इतना है तो ही एक्सेप्ट करेंगे, अगर इससे कम है तो हम रिजेक्ट करेंगे, तो एट द मोस्ट आपका स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर कोई ऐसी कंडीशन है, अगर आपको कुछ बेनिफिट देना है तो यहाँ तक ही आप बेनिफिट ले सकते हो. अगर उससे ज़्यादा अगर बेनिफिट लेना चाहा तो आप
रिजेक्शन में आ जाओगे। तो ये आपका वन टेल हुआ। टू टेल का मतलब क्या होता है कि टू टेल मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एट बोथ द साइड्स, मतलब ये भी रिजेक्शन एरिया है, ये भी रिजेक्शन एरिया। तो कब हमको स्मेल करना है कि वन टेल कब यूज करना है और टू टेल कब यूज करना है। तो वेन एवर यू फाइंड द स्टेटमेंट, सो कंपेरेटिव डिग्री स्टेटमेंट्स, अदर देन, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, सुपीरियर देन you should go with the one tail only, one tail only। अगर आपका स्टेटमेंट यस और नो में आ रहा है, सपोज एवरेज वेट, एवरेज हाइट और एवरेज वेट इज 60 और नॉट, 60 और नॉट, तो 60 से ज़्यादा है तो भी रिजेक्ट होगा, 60 से कम है तो भी रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, 5% मतलब 2.5% यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्शन एरिया और 2.5% यहाँ पे आ जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक ही साइड पे रिजेक्शन एरिया है तो मतलब 5% कंप्लीटली एक ही साइड पे लोकेट होगा। सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, ओके लेट मी रिफर द स्टेटमेंट। नाउ इफ गिवन नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड यूजिंग द क्रिटिकल रीजन रिप्रेजेंटेड टू बाय बोथ द टेल्स of the normal curve, it is called two-tailed test. If the null hypothesis is tested using the critical region represented by only one tail of normal curve, it is called one-tailed test. So I already discussed this part. Let me show you the one-tail concept and two-tail concept. So these are the critical region 0.25, 0.25, and one-tail critical region 5% is one-sided, 0.05 एक्चुअली, ये आई सपोज फिगर गलत है, ये भी 0.025 होगा क्योंकि 5% मतलब क्या होता है, 5% मतलब 5 डिवाइड बाई 100 होता है, तो 0.05 होता है। क्लियर? तो ये आपका दोनों जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि असिमेट्रिकल कर्व है, तो ये आंसर आएगा 0.0025। तो 0.0025 टेबल वैल्यू कहाँ पे मिलेगी वो आपको चेक करना है, तो 1.96 के आगे आपको ये एरिया मिलने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 1% और 5%। यहाँ पे 5% को इक्वली डिवाइड किया है, यहाँ पे 1% को इक्वली डिवाइड किया है, और अगर वन टेल है तो आपको 5% कंप्लीट लेना है, 1% कंप्लीट लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर theoretical concept. Now decision making, again if you are any point, if you are testing at the two tail test and your point is falling here, z is equal to answer is 1, then you should accept, suppose say for example this is minus 1.96 and your answer is minus 0.5, minus 0.5, then again you are going to accept the hypothesis. Exercise, so we'll discuss in next lecture. Thank you. Good afternoon, friends. So here I am continuing this next session of the testing of hypothesis. So hopefully you are this audio is audible. Some people are asking that audio is not audible, so that is why I am speaking loudly. That doesn't any issue. Now let me have the basic idea. So if as I discussed in class, that whenever you are going to test something, so first of all you have to set up a hypothesis first, and after the set hypothesis you can proceed to your next step. So in last sample, let me reduce the size. In last sample we are having 5 tests, among 3 of that for the quantitative and 2 for the qualitative. Now in quantitative we are going to test a simple mean or population mean. We are comparing two mean, मतलब जो भी 2 populations होंगे उनको टेस्ट करेंगे और फिर 2 standard deviation को टेस्ट करेंगे. So these are covered in large sample quantitative test. Now in qualitative we are going to test a quality of that parameter, means जो भी होगा क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगी उसको टेस्ट करेंगे और फिर सेकंड में कंपेयर करेंगे. सो लेट्स हैव द फॉर द एट्रीब्यूट्स.
सॉरी ये हमारा एक पेज आगे आ गया, टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स. सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, एज आई टोल्ड इन फर्स्ट फ्यू सेकंड्स अगो. देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन टू मीन्स, जो भी आपको कंपेयर, दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना है. एंड टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट मेंशन कर दिए हैं. नाउ इन दिस 2 पार्ट्स we are having that called attributes test of significance of proportion mean and test of significance difference between two proportion means. हाँ, भले ही यहाँ पे सक्सेस लिखा है बट इट्स अ मीन. मीन को ही फोकस करेंगे सर. प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस वो दैट इज पी को टेस्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस लिखा है. एनीवे, सो व्हेन यू आर गोइंग टू टेस्ट समथिंग यू नीड टू फॉलो दिस 4 steps. Those 4 steps, first one is starting clearly null and alternate hypothesis. Second, finding out the difference between observed value and the theoretical value taken in null hypothesis. Third is calculating of standard error of statistic. And fourth one is computing the value of z. And after completing this z value, you have to remember this table values. So in short, I have already discussed this diagrams, and according to this diagram I am going to give you a few values, and those values are okay. Here it is. So when you are testing at the 5% level of significance, mostly in 99% cases you are going to test at 5% level of significance. So when you are testing at 5% level of significance, then z value for the two tail it is 1.96, and for the one tail it is 1.645. And if you are testing at 1% level of significance, then for the two tail it is 2.58, and for the one tail it is 2.33. Now among these, not among this, if you are having test like 10%, जो होने वाला नहीं है नहीं है नहीं है, मतलब ये टेबल वैल्यू डिराइव करके दी है, तो वो आपका ये 10% का हाफ 5% हो जाएगा, 5% का वन टेल, क्योंकि वो मैंने डायग्राम्स में आपको दिखाया कि किस तरह से वैल्यूज़ डिराइव करते हैं. हाँ, अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल का कंसेप्ट की ओर जाना होगा. अगर 10% है, 10% मतलब 5% इस साइड पे होगा और 5% इस साइड पे होगा, तो 5% मतलब 45% कहाँ पे वैल्यू मिलती है, तो 1.465 पे मिलेगी आपको. तो ये जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज है उसी हिसाब से आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी. इन शॉर्ट ये वैल्यूज़ कहाँ से ली हुई है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पर से डिराइव की हुई वैल्यूज़ है. इन शॉर्ट, लेट मी कंक्लूड दिस पार्ट. टू टेल फॉर 1% 2.58, two tail for 5% 1.96, one tail for 1% 2.33, and for 5% it is 1.645. यहाँ पे दो वैल्यूज़ नियर बाय है, तो आपको 1.96 और 1.645 इजीली याद रहेंगे इसी तरह से. और यहाँ पे 2.33 है तो उसके नीचे का, सॉरी 2.58 है तो उसके नीचे की 2.33 है. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टेस्ट. That first test is test of significance of mean. So when you are testing a mean value of population, at that moment you can apply this test. So its h naught is what? H naught is mu is equal to mu 0. Mu 0 is what? It's a statistic value. कोई भी वैल्यू होगी जो आपको टेस्ट करनी है, whether it is or not. हाँ, अगर it is or not है तो h1 क्या आएगा? Mu is not equal to 0. And then difference is what? X bar minus mu 0. What is the x bar? It's a statistic value. What is the mu 0? It's defined value. हाँ, mu क्या है? पैरामीटर वैल्यू है, क्योंकि पॉपुलेशन वैल्यू है. ये आपको समझना है. व्हाट इज द पैरामीटर एंड व्हाट इज द स्टैटिस्टिक. पैरामीटर पॉपुलेशन वैल्यू, स्टैटिस्टिक सैंपल वैल्यू. सिग्मा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज व्हाट? सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n. सो व्हेन यू आर हैविंग सिग्मा, इट मीन पैरामीटर वैल्यू, पॉपुलेशन वैल्यू, सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n. After getting these two value, difference and standard error, you can apply to the common formula. Z is equal to, your Z value will remain, any calculated value will remain difference upon standard error. ये आपका फॉर्मूला परमानेंट फॉर्मूला है, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड. बट डिफरेंस अलग अलग होगा, स्टैंडर्ड एरर अलग अलग होगा. स्टैंडर्ड एरर हर एक फॉर्मूला का डिफाइंड होगा. डिफरेंस अंडरस्टूड है कि आप
क्या टेस्ट करना चाहोगे और क्या वैल्यू के साथ टेस्ट करना चाहोगे, उसका डिफरेंस आपको लेना है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंस. एंड स्टैंडर्ड एरर हर एक फॉर्मूला अलग अलग, सॉरी, हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग फॉर्मूला रहेगा. सो व्हेन यू आर टेस्टिंग अ सिंपल मीन, एट दैट मोमेंट सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, sigma upon square root of n is your standard error. Now without discussing much more, let me have one question, and through the question we'll try to understand what is the story. Yes, a sample of 400 students. So let me not the value, sample of 400 मतलब लार्ज सैंपल का टेस्ट है, सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है. अब उसका मीन हाइट, इसका सैंपल का मीन हाइट कितना है, 171.38 है. सो एक्स बार वैल्यू इज गिवन 171.38. नाउ कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज रैंडम सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन. यहाँ पे डेटा किसका है, लार्ज पॉपुलेशन, विथ मीन हाइट. अब मीन हाइट कितनी है, 171.17 है, इज इट. एंड डेविएशन तो सिग्मा कितना है, 3.3 है. अब ये रीजनेबली रिगार्डेड एज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन. अब हमको हाँ के ना में आंसर करना है. सो व्हेन यू आर हैविंग सिचुएशन यस और नो, योर आंसर इज इन यस और नो, एट दैट मोमेंट you should apply or you should go with the two-tail test. So H naught is what we need to focus. We need to test mu is equal to 171.17 or not, question mark. So my H1 is mu is not equal to 17.17. तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ इन द सेकंड स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर. नाउ डिफरेंस आई कैन कैलकुलेट इट सेपरेटली ऑल्सो. तो मैं पहले डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ. डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बार माइनस म्यू, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू. व्हाट इज द एक्स बार, 171.38 एंड व्हाट इज द म्यू, 171.17. इसका मॉड्यूलस वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू आंसर नहीं होना चाहिए. तो 38 माइनस 17 प्लस 4 21 आएगा, और 171 माइनस 171 तो 0.21 आया. अब स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन. नाउ व्हाट इज द एन, एन इज 400, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन कितना होगा, 20 होगा. नाउ व्हाट इज द सिग्मा, इट इज 3.3. So 3.3 divide with 20, is it 0.165? Obviously. Now you may apply these two values in the formula, 0.21 divide with 0.165. So whatever you are getting the answer, that answer according to the textbook, it is 1.27. So once you derive the value, you have to compare with table value. Now let us define the table value. What we are going to do, we are going to test the two-tail test. We are going to test two-tail test. At what level of significance, 5% level of significance. Two-tail, how can we define it is one tail or two-tail? So from the alternate hypothesis, it is not equal to, it means it is two-tail test. And at what level of significance, 5% level of significance. तो fill in the blank, तो कौन सा आएगा, 1.96 आएगा. तो 1.96 at 5% level of significance फॉर टू टेल आएगा. तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज है. नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर z कैलकुलेटेड इज हायर और z टेबुलर इज हायर. सो z टेबुलर इज हायर. सो देयरफॉर नाउ आई कैन कंक्लूड, हाँ ये हमारी वैल्यूज जो डायग्रामिकली मैं आपको बताऊँ, तो z टेबुलर वैल्यू क्या है, 1.96 यहाँ पे है. ये हमारा रिजेक्शन एरिया है, ये हमारा रिजेक्शन एरिया माइनस 1.696. माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि हमने मॉड्यूलस वैल्यू ली है. इन शॉर्ट हमने जो मॉड्यूलस वैल्यू ली है मतलब ये 0 से लेके 1.96 का जो भी खेल है वो ये है. तो ये हमारा आंसर कहाँ पे आया, कितना आया, 1.27. इट इज़ अप्रोक्सीमेटली हियर 1.27 यहाँ पे आएगा. तो ये तो क्या हो गया, ये रिजेक्शन एरिया है. तो बीच वाला एरिया क्या हो गया, एक्सेप्टेंस. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस. H naught accepted. You may accept the H naught. H naught may be accepted at 5% level of significance. Therefore, the sample may be regarded as random sample from a population whose mean is 171.17.
क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हो, हमारा हाइपोथेसिस क्या था, या यस म्यू इज इक्वल टू 171.17 ही है, तो ये जो मीन वैल्यू डिफरेंस भले ही 17 था, बट वेरिएशन जो है वेरिएशन के हिसाब से कंट्रोल में है, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू accept the hypothesis. So here I am roughing this board work. You may get the screenshot if you need. अदरवाइज आप वीडियोस रन करें तो बार बार आप रिवाइंड करके या फिर थोड़ा 10 सेकंड्स बैक करके भी आप इसको स्क्रीन को अच्छी तरह से वॉच कर सकते हो. क्लियर. सो नाउ लेट मी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ जिससे आप लोगों को भी आइडिया आएगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से डील किया जाता है. सो अ स्टेनोग्राफर क्लेम्स दैट, यस दैट स्टेनोग्राफर इज क्लेमिंग समथिंग. सो इफ यू रिमेंबर माई वर्ड्स इन विच यूज्ड इन क्लासरूम, सो वेन एवर यू आर हैविंग क्लेम at that moment you should use one tail test. Now let's check the information. Stenographer claimed that he can write at an average speed of 120 words per minute. तो ये क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन साइज का जो मीन वैल्यू है वो 120 है. Now in 100 trials, now he is going to attempt 100 trials, that is n is equal to 100. सैम्पल है जो 100 का है. एवरेज स्पीड निकल के क्या आई, 116 निकल के आई. और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला एस निकला एक्चुअल में A15. सर एस क्यों लिखा, सिग्मा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायल नंबर्स दिया, ट्रायल मतलब क्या हुआ, सैंपल में से जो नंबर निकल के आ रहा है वो x बार हुआ, और वो स्मॉल वैल्यू है दैट इज स्टैटिस्टिक वैल्यू है तो वो ही s हुआ. तो इज द क्लेम जस्टिफाइड, तो यहाँ पे उसकी जो क्लेम है, क्लेम क्या है, स्टेनोग्राफर क्लेम्स दैट he can write at an average speed of 120 per word per minute. तो अगर उसका क्लेम 120 से कम है तो रिजेक्ट होगा. तो म्यू इज इक्वल टू 120 है वर्सेस म्यू 1 क्या होगा, अगर 120 से कम हुआ तो रिजेक्ट होगा. क्लियर. 120 से ज़्यादा हुआ तो अच्छा है, क्योंकि हमको हमारा क्लेम से अगर अच्छा कुछ मिल रहा है तो वो ऑलवेज वेलकम होता करते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू कॉमन फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर. नाउ लेट अस कैलकुलेट डिफरेंस. डिफरेंस इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू. सो x बार माइनस म्यू, x बार कितना है 116, म्यू कितना है 120, तो आंसर कितना आया 4 आया. अब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n. मगर सर सिग्मा तो है नहीं. सो इन स्टैटिस्टिक्स if you are not having sigma you can use s instead of sigma, तो s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा. तो 115 डिवाइड विथ 10 आएगा, तो ये 1.5 हुआ. तो हमारा फाइनल क्या हुआ, 4 अपॉन 1.5. यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ. 4 अपॉन 1.5 एंड व्हेन आई एम एंटरिंग इट्स आंसर इज 2.67. नाउ z टैब चाहिए. हाँ कैलकुलेटेड हो गया. z टैब क्या आएगा, एट 5% लेवल पे से करना है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर व्हाट, वन टेल टेस्ट. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2.58. हमारा टेबुलर बड़ा है कि कैलकुलेटेड बड़ा है, तो कैलकुलेटेड बड़ा है टेबुलर से. उसका मतलब क्या होगा, H0 शुड बी रिजेक्टेड. तो उसका क्लेम है वो गलत है. उसकी स्पीड क्या है, अराउंड 120 और उससे कम है. सो नाउ लेट्स एग्जामिन द कैलकुलेटेड वर्क. म्यू इज इक्वल टू 120, म्यू इज लेस देन 120, दैट कैलकुलेट डिफरेंस इज 4. हाउ वी कैलकुलेटेड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट पार्ट. In the next page, SE, sigma upon square root of n, 15 upon 100, that is 10, 1.5, 1.645. Oh sorry, 5% पे किया ना, ओके 1.645 आएगा, 2.58 की जगह पे 1.645. इज इट, सॉरी. तो ये 2.67 1.645 से ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे एवरेज, द क्लेम दैट एवरेज स्पीड is 120 वर्ड पर मिनट
may be rejected, it is maybe less than 120 per words per minute. So this is how you can calculate all your sums from this concept. So in next lecture I will discuss the next test. So till then, bye, thank you. Friends, so here I am going to take your next lecture. So in this lecture again we'll try to discuss questions. Now we have discussed in last lecture what we did discuss in last lecture, that first of all how to make it conduct a test, and then how can we conclude the test. Now I am continuing with this the large sample test. So in large sample test, firstly we discussed that population mean, mu is equal to mu 0 versus mu is not equal to mu 0, or mu is less than mu 0, or mu is greater than mu 0. Now for this exercise I am considering one of the question. So let me have this question. A sample of size 400 was drawn. So sample size is what? N is equal to 400. Now and sample mean was found. Sample mean matlab x bar is found 99. Now what we need to test? Test whether the sample could have come from the normal distribution with 100 mean. So हमको टेस्ट करना है मीन 100 है कि नहीं, एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और नॉट. मतलब ये जो भी हमारा पॉपुलेशन है इसमें से ही ये सैंपल लिया गया है कि नहीं है वो चेक करना है. नाउ फॉर दैट फर्स्ट, एज आई टोल्ड, फॉर एनी इक्वेशन फ्रॉम द टेस्टिंग पार्ट यू शुड बिल्ड द हाइपोथेसिस फर्स्ट. सो म्यू इज इक्वल टू 100, सो विच वी नीड टू टेस्ट वर्सेस उसमें से है कि नहीं है ये टेस्ट करना है. सो इट विल बी टू टेल टेस्ट एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 100. Then we need to calculate Z calculated. Its formula is equal to difference upon standard error. Now what is the difference? Difference is x bar minus mu or mu minus x bar, that modulus difference, and standard error is what? Sigma upon square root of n. So we need to calculate two values, one numerator, one denominator. Now numerator value 99 minus 100 or 100 minus 99, that will be 1, and denominator sigma upon square root of n. What is the n? Is 400. So square root of n is 20. Now what is the sigma? Sigma is 8. So 8 upon 20 is equal to what? So 0.4. So 1 upon 0.4 is the answer. Now 1 upon 0.4, that means 10 upon 4, and it will be 2.5. So our calculated value is 2.5. Now let us verify it whether it is or not. So yes, it is. Now we need to verify whether this value is validate the significance or not. What is the significance? So when you are testing a two-tail test, so it value should be less than 1.96 or greater than minus 1.96. So if your value lies between this range, then only you can say that the test is accepted. But this value 2.5 is almost above this. So we can say that the tabular value is 1.96 at 5% level of significance for two tail. I am not writing that part. So now here I am concluding Z calculated is greater than Z tabulated. So H naught should be or may be rejected. Now when we are rejecting H naught, it means we are accepting H1. It is H1. So what is the H1? Its population mean is not 100. It means it is above 100 or below 100. So this is the exercise question number 5. I have explained the solution of question number 5. Now let me erase it. Now let me conduct this next. Let me have the next question. A sample size of 36 was taken, the inverse of size 1000. Now here we are having capital N. From the capital N we are selecting small n. तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कभी भी कैपिटल N नहीं दिया था. What it mean by? It mean by this question is for the finite population.
अगर आगे का क्वेश्चन देखना तो आपको पॉपुलेशन नंबर नहीं दिया, सैंपल नंबर दिया है। तो जब कभी भी फाइनाइट पॉपुलेशन होगा, सो इन दैट केस योर स्टैंडर्ड एरर टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस एन डिवाइड विथ n माइनस 1। कोई भी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा उसको ये फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर, so when we realizing that our population is finite, now what is the mean of finite? So it's a countable. If number is known, number is countable, then we are calling it finite population. So now let me have the question 36 from the universe 1000. It was found that sample average was 20 with variance 60. So sample average means x bar is equal to 20 and variance is equal to s square is equal to 60. Now how will you examine that the average in the universe is 22? So what we need to test, h naught mu is equal to 22 versus mu h1 mu is not equal to 22. Now let's have the calculated formula. Calculated formula is equal to what? Difference upon standard error. So first I am calculating difference. Difference is equal to x bar minus mu and it is equal to 2. Now I am going to calculate standard error. Standard error formula sigma upon square root of n. This is the common standard error for this kind of test, but as I told, it is a finite distribution, so we need to multiply n minus n divide with n minus 1. So sigma is equal to what? Instead of sigma here we are having s, so in short 4 is the answer. Divide with 6 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ n 36 n दिया है. अब कैपिटल N is 1000 माइनस 36 इज इक्वल टू व्हाट? 964 डिवाइड विथ 999. तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर हो गया. नाउ लेट मी हैव दिस कैलकुलेशन विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. सो 964 डिवाइड विथ 999 is equal to whatever I am getting, I am taking square root of it. स्क्वायर रूट हो गया तो इसका आंसर कितना आया? 9.83 रेस टू ई रेस टू माइनस 4 है, मतलब ये 0.00009 हुआ. वन मोर टाइम 964 डिवाइड विथ 999, ये जितना भी हुआ इसका स्क्वायर रूट 0.96 है. स्क्वायर रूट कितना होगा? फिर से एक बार स्क्वायर रूट निकाल दिया. हाँ, इंटू कितना होगा? 4/6. 4/6. तो ये आंसर आ गया 0.6548. अब हमको करना क्या है? कैलकुलेटेड में डालना है, मतलब 2/0.6548 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये इतना आंसर हो गया. इंटू 2 आंसर कर देता हूँ इज इक्वल टू 3.05 आंसर आया. 3.05. तो ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हुआ? z इज इक्वल 3.05. अब करना क्या है? वी नीड टू कंपेयर विद द टेबुलर वैल्यू. विच काइंड ऑफ टेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल we need to check whether it is one tail or two tail. So not equal to is mentioning it is a two tail test. So for the two tail test at the 5% level of significance value is 1.96. At 5% level of significance for two tail. अब कौन सी वैल्यू हायर है? टेबुलर और कैलकुलेटेड. सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलर. सो देयरफॉर h नॉट मे बी रिजेक्टेड. क्लियर? सो थ्रू दिस वे यू कैन कैलकुलेट द नंबर्स. नाउ आई एम जंपिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी. इस क्वेश्चन में क्या करोगे? तो ये मैन्युफैक्चरर बॉल पेन क्लेम्स दैट, क्लेम आया मतलब वन टेल हो जाएगा. कि टेस्ट क्या करना है? म्यू इज इक्वल टू 400 है और
रिजेक्ट कब होगा? जब 400 से कम होगा तो रिजेक्ट होगा, 400 से ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट होगा। तो आपका म्यू H1 क्या बनेगा? म्यू इज़ लेस देन 400। So you may apply one tail test. So I am erasing this part again. So for having next question, so let me erase it. Now let me have the next test of significance between two means. So when you are comparing two populations, सपोज आपको कोई डेटा, एक सिटी का डेटा दूसरे सिटी के साथ कंपेयर करना हो, या फिर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ करना हो, या फिर एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ करना है, इन शॉर्ट यू आर गोइंग टू कंपेयर टू population. In that case you can apply this test. Now when you are examining then you will get the x1 bar and x2 bar value, and then you can test whether they are equal or not. One is higher, one is superior, mu1 is greater than mu2 or mu1 is less than mu2. It will go to the one tail test. Now what is the difference calculation? So x1 bar minus x2 bar, and the standard error of this. So in last test what was the standard error? Sigma upon square root of n. There were a single population, एक ही population था. अब इसका standard error जरा compare करो, तो instead of this shall I write sigma square upon n? Yes I can, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट बार है, सॉरी ये स्क्वायर रूट सिर्फ n का है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा को स्क्वायर रूट के अंदर ले रहा हूँ, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n हो गया. तो अब मेरे पास अगर दो पॉपुलेशंस है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. फर्स्ट पार्ट फॉर द फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड पार्ट फॉर द सेकंड पॉपुलेशन. तो आपका स्टैंडर्ड एरर टेक्निकली अगर आप जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज रट्टा मारू में प्रॉब्लम्स हो सकता है. सो हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. फिर कॉमन पार्ट है z इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, एंड देन यू नीड टू कंपेयर दिस वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू विद द टेबुलर वैल्यू. इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज less than tabular value, then in that case you are accepting h0. If calculated value is greater than tabular value, in that case you are rejecting h0. So the average life of 150 electric bulbs of a company A, so let me note the values. So 150 bulbs, n1 is equal to 150, and average life x1 bar is equal to 1400, with standard deviation value s1 is equal to what? 120 hours. Now company B is having one data is missing, life of तो इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये नंबर हमको नीचे से लेना पड़ेगा. टिल देन लेट मी नोट द वैल्यू. 1200 x2 bar 1200 s2 is equal to 80. Now we need n2. n2 कितना है देख लेते हैं. Now what is the question? Is the difference between the average life of bulbs is significant or not? So first we need to set h0. h0 is equal to mu1 is equal to mu2, and difference significance है कि नहीं है. So that is why I am applying two tail test, and in two tail test alternate hypothesis will be h1 is not equal to h2, mu1 is not equal to mu2. Now let me have this calculations part. So difference is what? 200, 1400 minus 1200 modulus difference. Now n1 and n2 is 200. So if you are applying the given values into the formula, then your standard error formula is what? Square root of sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. So simply you need to take help of calculator, and you are getting standard error is equal to 11.314. Clear? So I am not writing here. So clearly I am mentioning that z is equal to difference upon standard error,
200 divided by 11.314 and its answer is 17.68. Now what is the 1.96? It's a tabular value, so you can mention it in a separate line. Z tab is equal to 1.96 for the 5% level of significance for two tail test. Then you may compare Z calculated and Z tabular. Here they have already calculated and mentioned it that calculated value is higher than tabular value, so H0 may be rejected. So the conclusion is what? The difference between the average of two types of bugs is significant. Clear? So this is what is today's lecture. In next lecture I will conduct